Welcome to another video where we will be discussing the question answers of the chapter A Letter to God. What did Lencho hope for? In the story A Letter to God, Lencho hoped for a good downpour or at least a shower to water his ripe corn field. As a farmer, he desperately needed this rain to ensure a successful harvest, which would provide food and prosperity for his family. Lencho's field was ready for harvest, but it only needed water. He was a very efficient farmer. He watched the sky in the northeast for the signs of rain and expected rain to secure his livelihood. इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड लेंचो एक सिंपल फार्मर था जो अपनी खेती पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट था. ही होप्ड फॉर अ गुड डाउनपोर या कम से कम एक अच्छी सी शार ताकि उसकी राइप कॉर्नफील्ड को पानी मिल सके. एज अ फार्मर उसके लिए रेन बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसी पर उसका हार्वेस्ट डिपेंड कर रही थी जो उसके फैमिली के लिए फूड और प्रॉस्पेरिटी ला सकती थी. लेंचो का फील्ड हार्वेस्ट के लिए रेडी था लेकिन उसे पानी की जरूरत थी. इसीलिए वो बार बार नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में स्काई की तरफ देख रहा था. रेन फॉल के साइंस के लिए, क्लाउड्स के साइन के लिए. उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि रेन उस डायरेक्शन से आएगी और इससे उसका लाइवलीहुड सिक्योर हो जाएगा. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? In A Letter to God story, Lencho compared the raindrops to the new coins because his cornfields needed rain to ensure a bountiful harvest, which would result in his financial prosperity. He viewed the rain as a precious wealth falling from the sky that would earn him money. He described the larger raindrops as 10-cent coins and smaller ones as the fives. The ripe cornfields desperately needed water, and the rain arrived just in time, signaling a very successful harvest from the ripe cornfield. This was the main reason that Lencho was comparing the raindrops to the new coins. इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड में लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन्स से कंपेयर किया बिकॉज उसके कॉर्नफील्ड्स को रेन की बहुत ज़रूरत थी. उसके लिए रेन सिर्फ पानी नहीं थी बल्कि एक तरह की वेल्थ थी जो स्काई से गिर रही थी. लेंचो को लगता था कि अगर अच्छी रेनफॉल हो जाएगी तो उसके क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और उससे उसको अच्छा पैसा मिलेगा जब वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेगा. इसीलिए उसने बड़े रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस और छोटे ड्रॉप्स को 5 सेंट पीसेस के रूप में डिस्क्राइब किया. ये कंपैरिजन दिखाता है कि वो रेन को कितना वैल्यूएबल समझता था. उसके राइप कॉर्नफील्ड्स को डेस्परेटली वाटर चाहिए था और जब रेन टाइम पर आई तो उसे लगा कि उसकी हार्वेस्ट भी सक्सेसफुल होगी. इस मोमेंट में रेन उसके लिए एक ब्लेसिंग थी जो उसकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का सिग्नल दे रही थी. How did the rain change? What happened to Lencho's fields? The gentle promising rain unexpectedly turned into a destructive hailstorm, producing large hailstones, a strong wind, and freezing cold. The rain initially started as a much needed blessing for Lencho's crop, but soon transformed into a violent large hailstorm. This storm completely ruined Lencho's cornfield, leaving the field covered in a white layer of salt like hail, with the leaves and the flowers destroyed completely and destroying the hopes for a good harvest also. इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड शुरू में रेन बहुत जेंटल और प्रॉमिसिंग लग रही थी भी. लेंचो बहुत खुश था क्योंकि उसकी क्रॉप्स को पानी मिल रहा था. लेकिन थोड़ी देर बाद ये अचानक से डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म में बदल गई. तेज हवा चलने लगी, बड़े बड़े हेलस्टोन्स आसमान से गिरने लगे और वेदर बहुत ही कोल्ड हो गया. जो रेन पहले ब्लेसिंग लग रही थी वो ही अब एक वायलेंट स्टॉर्म बन गई थी. इस हेल स्टॉर्म ने लेंचो के फील्ड्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. कॉर्न फील्ड्स पर वाइट लेयर जम गई जो सॉल्ट जैसी लग रही थी. लीव्स और फ्लावर्स सब टूटकर गिर गए और पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई. एंड में लेंचो की सारी होप्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट खत्म हो गई क्योंकि स्टॉर्म ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था. What were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hail stopped, Lencho was filled with deep sadness, despair, and anxiety. Surveying his ruined field, he felt hopeless because this destruction meant his family would face hunger. He expressed that even a plague of locusts, टिड्डियों के दल के प्रकोप, would have left more feeling deeply worried about his family's future, saying, "We will all go hungry this year." Despite his despair, he had firm belief in God.
इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जब हेल स्टॉर्म रुक गया, लेंचो के फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो गई। वो बहुत सैड, होपलेस और एंशियस हो गया। जब उसने अपने रूइंड फील्ड्स को देखा तो उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है और उसकी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का प्रकोप भी इससे कम डैमेज करता। उसके वर्ड्स वी विल गो हंग्री दिस ईयर उसकी डीप वरी और डिस्पेयर को शो करते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन इतनी प्रॉब्लम के बाद भी लेंचो ने होप नहीं खत्म की। उसका गॉड पर स्ट्रॉन्ग फेथ था और उसे पूरा यकीन था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? In the story A Letter to God, Lencho had complete faith in God. He firmly believed that God would understand his problem and help him in his difficult time, believing God's eyes see everything, even one's conscience. Because of this strong faith, Lencho wrote a letter to God. In the letter, he asked for 100 pesos so that he could feed his family until the next harvest and also buy seeds for resowing the crop. This shows that his faith was very deep. He truly believed that God would read his letter and help him. In the story A Letter to God, Lencho had complete faith in God. उसको पूरा यकीन था कि गॉड उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसकी हेल्प भी करेंगे। वो मानता था कि गॉड की आईज सब कुछ देख सकती हैं, इवन इंसान के कॉन्शियंस को भी, अंतरात्मा को भी। अपनी स्ट्रॉन्ग फेथ की वजह से लेंचो ने गॉड को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने 100 पेसोज मांगे ताकि वो अपनी फैमिली को नेक्स्ट हार्वेस्ट तक खाना दे सके और दोबारा क्रॉप लगाने के लिए सीड्स भी खरीद सके। ये दिखाता है कि गॉड पर उसका पूरा फेथ था और उसे पूरा भरोसा था कि गॉड रिप्लाई जरूर करेंगे। Who reads the letter? The postmaster read Lencho's letter addressed to God. He was initially amused, but he was quickly moved by Lencho's immense faith in God and also decided to respond to the letter to help him. इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, द पोस्ट मास्टर जो है उन्होंने लेंचो का लेटर पढ़ा जो गॉड के नाम पर लिखा गया था। शुरू में वो थोड़ा अम्यूज हुए, थोड़ा हंसे, क्योंकि एक आदमी डायरेक्टली गॉड को लेटर लिख रहा था। लेकिन जल्दी ही वो लेंचो के स्ट्रॉन्ग फेथ से डीपली इम्प्रेस भी हुए और मूव भी हो गए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे और उस लेटर का रिप्लाई भी करेंगे। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? To prevent Lencho's faith in God from shaking, the postmaster decided to answer Lencho's letter by collecting money from his employees, friends, and donating a part of his own salary to send for Lencho's help. इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, लेंचो का फेथ गॉड पर बहुत स्ट्रांग था और पोस्टमास्टर नहीं चाहते थे कि ये फेथ टूट जाए। इसीलिए लेंचो का फेथ शेक होने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो उसके लेटर का आंसर करेंगे। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज और फ्रेंड्स से पहले पैसे कलेक्ट किए और अपनी सैलरी का भी एक पार्ट डोनेट कर दिया। फिर उन्होंने ये पैसा लेंचो को भेज दिया ताकि लेंचो को लगे कि ये हेल्प डायरेक्टली गॉड की तरफ से आई है। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not surprised to find a letter with money in it. This is because he had complete faith in God. He was fully confident that God would help him after the hailstorm destroyed his crops. That is why, when he received the letter, he believed it was exactly what he had asked for, help from God, and he accepted it naturally without any surprise and without even any logical thinking or reasoning. What made him angry? Lencho had asked God for 100 pesos, but he received only 70 pesos. This made him angry because he strongly believed that God could not make any mistake, and God at the same time cannot send less money also. So he thought that the post office employees must be behind this. He thought that they must have taken the remaining money. Now let's come to the summary of A Letter to God. The story is about a poor farmer named Lencho who lives in a solitary house in a valley. He eagerly waits rain for his ripe cornfield because the cornfield crops they need water to grow. When it finally rains, he is very happy, but soon the rain turns into a hailstorm and all the crops are destroyed. Lencho and his family are left with nothing to eat and they also face the fear of starvation. However, at the same time, Lencho had unshakable faith in God. He believes that God will definitely help him. So, he writes a letter to God asking for 100 pesos to survive till the next harvest and also to buy the seeds to start the farming again.
He goes to the post office in the town and he sends the letter through the mail. The postmaster reads it and is deeply moved by Lencho's faith in God. To keep Lencho's faith alive in God, he collects the money from his employees and his friends, and he even adds a part of his own salary to send to Lencho. Together, the post office employees and the postmaster and the friends manage to send 70 pesos to Lencho. The postman hands the letter to Lencho when Lencho comes to the post office to collect his letter. When Lencho receives the money, he is not surprised because he believed that God will reply back to him. But when he counts the money, he gets angry and he thinks that God cannot send him less money, nor God would ever deny to help him. Then, how the money was less? He thinks that God wouldn't make a mistake. So he thinks that the post office employees must have stolen the rest of the money. He writes another letter to God asking for the remaining money as he needed the money very badly, but tells God not to send it through the post office, calling the employees a bunch of crooks. So the ending of the story is showing the irony. It is highlighting the irony that the people who actually helped Lencho, they attained the image of a bunch of crooks in the mind of Lencho because he was very naive. Lencho failed rational thinking and he had complete faith in God. So he failed to understand that he might be getting the help from the humans. This was the lack of understanding on the part of Lencho, which made him think that the post office employees were a bunch of crooks. Instead of thanking them, he started to blame them.